भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफी लंबे अरसे से चला रहा है, लेकिन ये विवाद तब सबसे ज्यादा बढ़ गया था जब 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। चीन ने कायराना तरीके से भारतीय जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन निहत्थे भारतीय जवानों ने भी चीनी सेना के सामने घुटने नहीं टेके। कई घंटों तक चली इस हिंसक झड़प में भारत के इन वीर जवानों का शौर्य देख दुश्मन की रूह कांप उठी थी। तभी से आज तक लद्दाख में तनाव जारी है और लगातार निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक बातचीत हो रही है, लेकिन इसका हल नहीं निकल पा रहा। दोनों तरफ की सेनाएं जमी हैं। 16 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सेना पीछे नहीं हट रही है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कुछ हद तक दोनों तरफ से कुछ काम हुए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अब उसी बीच ऑस्ट्रेलिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बयान दिया है, जिस पर हंगामा मचा है और गलवान को लेकर स्थिति साफ हुई है। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को सिडनी में लोवी इंस्टीट्यूट में अपने संबोधन के बाद सवालों के जवाब में ये टिप्पणी की। विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, चीन के साथ संबंधों में हमारे लिए 2.5 साल बहुत कठिन थे, जिसमें 40 साल बाद सीमा पर हुआ पहला खून खराबा शामिल है और जहां हमने वास्तव में 20 सैनिकों को खो दिया। साल 2009 से 2013 तक चीन में भारत के राजदूत रहे जयशंकर ने कहा कि हमारा प्रयास, मेरा प्रयास संवाद माध्यम को चालू रखने का रहा है। वास्तव में उसके बाद की सुबह मैंने अपने समकक्ष वांग को फोन किया और उनसे ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि चीनी पक्ष की ओर से कोई तनाव भड़काने वाला था या जटिलता पैदा करने वाला काम नहीं किया जाए। कूटनीति संचार के बारे में ये सिर्फ चीन के साथ संबंधों में नहीं है, यहाँ तक कि अन्य देशों के संबंध में भी है। यदि राजनयिक एक दूसरे के साथ संवाद नहीं करेंगे तो वे किस तरह की कूटनीति करेंगे? आखिर में देशों को एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ती है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जयशंकर ने क्या कहा और क्यों कहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गलवान में आज और उस वक्त क्या तनाव और हालात रहे होंगे, जिसकी चर्चा इतने दिनों बाद जयशंकर कर रहे हैं। आप उनकी पूरी बात सुनिए। We've had 2.5 very difficult years in our relationship with China. My endeavor has been to keep the communication lines going. And for me, diplomacy is about communication. You know, it's not just in relationship to China, even in relationship to your earlier set of comments about Ukraine. If diplomats do not communicate with each other, then what kind of diplomacy do they do? Let me change tack and ask you about China, if I may. As you know well, for 2 years Beijing had Canberra in the diplomatic deep freeze. And since the new Australian government took office in May, lines of communication have been reopening in different ways. It did seem to me that communications were never interrupted to quite the same degree between Beijing and Delhi, even in your most difficult periods when there were bloody clashes between your two militaries. Can you give us, I know you're very diplomatic, but can you, given that Australia is going through a transition period in our relationship with China, what would be your advice to Australia about how you re-establish a stable, productive relationship with a country that is so different from our own? You know, I am, especially after I became foreign minister, I'm very careful about giving advice. I'm even more careful about giving advice publicly. What I can share with you is that we've had 2.5 very difficult years in our relationship with China, which has included the first bloodshed we've had on the border after 40 years. And where we actually lost 20 soldiers. But our endeavor, my endeavor has been to keep the communication lines going. In fact, the morning after that, I called up my counterpart Wang and urged him to
ensure that there are no escalatory moves or complicating moves on the Chinese side. For me, diplomacy is about communication. It's not just in relationship to China, even in relationship to your earlier set of comments about Ukraine. If diplomats do not communicate with each other, then what kind of diplomacy do they do? So I really feel, shutting down talking, burning bridges, and I say this as a general principle. I would not, recommend it to anybody. There can be very testing times. I mean, we have another neighbor with whom we have a very difficult relationship. But at the end of the day, countries have to deal with each other, and you have to find some way of keeping that going.